Good morning, students. I'm going to start करिया second year नया topic physics. हमर आगु जहाँ सिस्टम थिला लास्ट ईयर रे हमर दुईटा ट्रैक चलियर गोटे इलेक्ट्रोस्टैटिक चलियर और ऑप्टिक्स चलियर हैला ए वर्ष भी सेम टॉपिक ट्रैक 1 रे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ट्रैक 2 रे ऑप्टिक्स चलची ऑलरेडी कामाख्य सर दैछथि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब मु तोर पढी ऑप्टिक्स पढी हैला तो फर्स्ट रे हमें सेकंड ट्रैक अछि सेतिर ऑप्टिक्स हम आज स्टार्ट करबा ऑप्टिक्स हैला सुनो दीटा खाता अलग करियो दीटा नोट अलग करियो तुमको YouTube रे भी छडाउ जे वीडियो आगो से वीडियो सब ट्राई करो लिखी निजे माने पॉज करी लिखिया पे ट्राई करो पीडीएफ भी छडा हबो किछि वारी हबोनी हैला आउ क्लियरली साइज रे स्टार्टिंग क्लास रो समस्त बुझी बुझी जीवो तो तमरो किछि असुविधा हबो ना हैला तो आज खाली पढौची तुम जहा डाउट थिबो तो डाउट क्लास और एक्स्ट्रा और क्लास करबा जहा डाउट थियो से क्लास डाउट को पछारी सो बता हम स्टार्ट करिया ऑप्टिक्स अच्छा देखो ऑप्टिक्स माने कोन एक्चुअली बेसिकली जो ऑप्टिक्स पार्ट अछि ऑप्टिक्स माने हला स्टडी ऑफ लाइट सिंपल आको कहबो स्टडी ऑफ लाइट माने कोन स्टडी ऑफ लाइट माने कोन लाइट ऊपर कोन पड़ी फर्स्ट लाइट माने कोन फर्स्ट कहयो लाइट माने हला सिंपल लाइट इज एन एनर्जी लाइट इज एनर्जी ओके ले लाइट ऊपर कोन पड़ी है जे हम एथि ऑप्टिक्स वाली यूज करे तो फर्स्ट कथा हला द स्टडी ऑफ लाइट अछि लाइट ऊपर कोन पड़ी है फर्स्ट कथा हला ऑप्टिक्स माने लाइट रो नेचर किमिति लाइट रो किमिति सोर्स होची लाइट ता किमिति प्रोपागेट होची लाइट रो बिहेवियर कोन आउ तार विजन कोन द स्टडी ऑफ ऑल दिस थिंग्स नोन एज ऑप्टिक्स ओके तो ऑप्टिक्स माने कोन पे लिखो ऑप्टिक्स माने हला ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with nature of light, sources, behavior or properties of light, and effect of vision लाइट रो नेचर कोन लाइट ता कि तार सोर्सेस कोन लाइट ता किमिति सोर्स तार होची तार प्रॉपर्टीज कोन आउ ये लगले वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट इफेक्ट ऑफ विजन देखो मु छोटो देखो आर प्ले मीनिंग सेंस लगले वेरी इंपोर्टेंट इफेक्ट ऑफ विजन कोन देखो जे कोनोसी ऑब्जेक्ट रे लाइट ता पड़ले ही हम जानि पारियो जे लाइट रो कलर कोन तो लाइट रो कलर वी कैन रिकॉग्नाइज द डिस्टिंग और यू कैन डिस्टिंग्विश द कलर्स of an object when light is incident on the object suppose तुम जदी पिले मन रखो डार्क रूम थिबो से डार्क रूम रे किछि ना किछि अलग अलग कलर लगा पकेबा तमे जदी कहबो ए लोगडा पिले बाहर करो ए कलर लोगडा you cannot find this color of type so when the light is incident over the given object माने पिले मन रखो हमें जहां नबा से object हमें जे रूम रे लुगा पके लुगा डाला object तो ये ऑब्जेक्ट ऊपर लाइट ता पड़ला तापर हमें डिस्टिंग्विश करि पारे जे से लोगर कलर कोन आर कलर कोन कार कलर कोन ता माने हला विदाउट लाइट an object cannot be recognized so that is the effect of vision so optics माने कोन simple optics is the branch of physics which deals with the nature of light sources properties of light and effect of vision the study of all those things known as what optics but one thing want to pile light hela energy light or energy form ro achi light और एनर्जी फॉर्म रो अछि
आर पिला मन और कथा कोस पिला मन रखो ऑप्टिक्स जीवा पूर्वरु मु केते जिंस पिला कहूची से पिला मन रखियो फर्स्ट वाला पिला कलर कजन कोन फर्स्ट कर दूची हम तो पिले बेसिकली पढ़थियो हमर पिले कलर वाला पिले V I B G Y O R विप भी अदर कलर टा इफ यू मूव फ्रॉम लेफ्ट राइट तो તમે લેફ્ટ રાઈટ મૂવ કર્યો વાયોલેટ ઇન્ડિગો બ્લુ ગ્રીન yellow orange then red if you move from left right so amount of wavelength increase our wavelength that is lambda increases kind of element देखो ई सब जागा अच्छी दीडे जिंस पे डिपेंड करो wavelength और frequency पिले जदी पिले देखो वायलेट तो तमे रेड जीवा माने वेवलेंथ रा कंटीन्यूअसली बढ़ी जीवो बट frequency will decrease this is a symbol of increase this is a symbol of decrease okay similarly if you move from right to left red orange yellow green blue everything you can move from right to left so what happened wavelength decreases frequency increases काहीना लाइट रो कलर टा डिपेंड करियो का ऊपर दीडा फैक्टर ऊपर ओने वेवलेंथ ऊपर और का ऊपर फ्रीक्वेंसी ऊपर ठीक अछि ए जिंसा पले मन रखो केतरे पले यूज करबी तो यूज होबो आ पले मन रखो वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर दैट मींस वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू frequency that means frequency increases wavelength decreases or frequency decreases wavelength increases so this is the user concept hela hele bata je mu complete कहथि optics माने study of light and ये हला definition of optics basically पहले मन रखो optics को हमें दीटा पार्ट डिवाइड करिया कोन गुटा तमरे लगले मन रखो जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स और हला फिजिकल ऑप्टिक्स गुटा तमरे पहले जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स और हला फिजिकल ऑप्टिक्स एथिरे जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़े पे गुटे हला कंडीशन हाईली एसेंशियल से कंडीशन यदि सैटिस्फाई हबो देन इट बिलोंग्स टू जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स रो फेनोमेना को से अकर करियो से कंडीशन ता कोनटा देखो आर पे फर्स्ट कंडीशन ला जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स रो सपोज फॉर एग्जांपल ये ला ऑब्जेक्ट ता प्रत्येक ऑब्जेक्ट रो साइज अछि हला दिस ऑब्जेक्ट ये ला ऑब्जेक्ट सपोज आप लाइट टा पड़ला जो लाइट टा आप पड़ियो लाइट आको पाबो दिस द आको पाबो रे ऑफ लाइट पाबो रे ऑफ लाइट पड़ला ता पाबो इंसिडेंट लाइट पाबो जो लाइट टा ऑब्जेक्ट रे पड़ला दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट लाइट का पे पड़ला हमें जो ऑब्जेक्ट नेले से ऑब्जेक्ट ऊपर इंसिडेंट हला सबले मन रखो प्रत्येक लाइट रो ଗୋଟେ वेवलेंथ अछि हला भाबो आर वेवलेंथ हला लैम्डा आर भी किछ ना किछ साइज अछि कार ऑब्जेक्ट रो साइज अछि तो मन रखो जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स को वैलिड करे पे गुटा हला हाईली इंपोर्टेंट कंडीशन कौन सी कंडीशन टा ना वेवलेंथ ऑफ लाइट मस्ट बी स्मॉलर देन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट यदि ए कंडीशन सैटिस्फाई हला then it is the valid point of geometrical optics कौन सी कंडीशन ला wavelength of incident light must be smaller than size of the object or obstacle whatever so this is the highly important conditions okay so when this condition is satisfied then
This belongs to geometrical optics. पिला मन रखो एथिरे तमरो दीटा पार्ट अछि गोटे तमरा हला रिफ्लेक्शन और हला रिफ्रैक्शन गोटे हला रिफ्लेक्शन और हला रिफ्रैक्शन हला तो हमें फास्ट पढ़े रिफ्लेक्शन तार पढ़े हमें रिफ्रैक्शंस ठीक अछि तापर हला फिजिकल ऑप्टिक्स play again that's आगु वाला दी बार व्यक्त कराला it is again divided into two parts one is called your wave optics second one is called your quantum optics wave optics रे तमरा हमें कोन कोन पढ़े एथरे एथरे पढ़े हमें इंटरफेरेंस diffraction and polarization तीन टाइप से पढ़िया इंटरफेरेंस diffraction and polarization quantum optics पिला मन रखो एथरे बेसिकली this is the higher studies part हला but एथरे कोन अछि कहै अछि photo electric effect Compton effect और laser etc केते जिंस अछि so this is the partitions of optics हम optics को बोले दी भाग रे कहते बोले और optics divided into two parts one is your geometrical optics other is physical optics again the geometrical optics is consisting of two parts reflection diffraction again the physical optics were two parts one is called wave optics other is your quantum optics and in wave optics we discuss about interference diffraction and polarization and this is your belongs to syllabus so other parts are higher studies so we will not concern about these chapters so we will focus on these chapters and these chapters तो अब पहले फर्स्ट स्टार्ट करिया रिफ्लेक्शन हां और कथा कोइ पहले मन रखो अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस हमर जहां न्यू सिलेबस रछि रिफ्लेक्शन रो किछि कांसेप्ट नाही हमें स्टार्ट रिफ्रैक्शन रो किंतु मो रिफ्लेक्शन किछि ना किछि कांसेप्ट करी तापर हमें जोया रिफ्रैक्शन को जिबा तो फर्स्ट टाइम पढ़िया रिफ्लेक्शन तापर पढ़िया हमें मु खाली ब्रीफ लागू पढ़ेबे रिफ्लेक्शन को तापर हमें पढ़िया रिफ्रैक्शन पढ़ी हला तो फर्स्ट टाइम स्टार्ट करिया रिफ्लेक्शन एती फर्स्ट नोट कर दियो जे लिखि नोट कर दियो ठीक अछि लिखे दोछि जदि जे लिखि न पॉज करी त YouTube रे छडाओ पॉज कर लिखियो तो हमें फर्स्ट स्टार्ट करिया जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स रो फर्स्ट पार्ट रिफ्लेक्शन
ओके तो फर्स्ट पढ़े हमें रिफ्लेक्शन माने कोन व्हाट इज रिफ्लेक्शन सपोज हमर एटा सरफेस अछि भाबो येला सरफेस ऊपर फर्स्ट लाइट टा पड़ला एनी लाइट टा आसला जो लाइट टा पड़ला ताको भाबो दिस इज कॉल्ड योर इंसिडेंट आउट बेल मन रखो हमें जो लाइट टा हिसाब करो ताको रे वाला हम हिसाब करछे दैट इज द रे ऑफ लाइट द सिंबल इज द रे ऑफ लाइट अगर आपको इमेज वाला यूज करछो सो ये रे ऑफ लाइट तो लाइट टा एडी पड़ला सरफेस रे पड़ला जो सरफेस रे पड़ला ताको आप पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जा पर पड़ला जते बोले ए और बी अपन ए बी लाइट आसला का पर पड़ला बी पर पड़ला सो ताको आप पॉइंट ऑफ इंसिडेंस तो बी हैला पॉइंट ऑफ इंसिडेंस तो ए लाइट पड़ला अब आप इंसिडेंट लाइट अच्छा फर्स्ट देखो रिफ्लेक्शन माने कोन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन है reflection is the phenomenon of light in which the light will bounce back to the same medium that is called reflection और कहले मो लाइट टा पड़ला और लाइट टा को बाउंस बैक हबो और बाउंस बैक और सेम मीडियम मथरे आसी तो इट इज द बाउंस बैक ऑफ लाइट टू द same medium so this is called simple reflection so it is the phenomenon in which the light will bounce back to the same medium it is the phenomenon in which the light will bounce back to the same medium known as reflection so light also कहाँ हो light again bounce back this is the bounce back so this is your incident light and this is also called reflected light reflected ray by reflected light you can take it reflected ray this is the point of incidence okay बता मु कोन करी ए पॉइंट ऑफ इंसिडेंस रे और नॉर्मल ड्रा करी नॉर्मल दिस इज कॉल्ड नॉर्मल माने हला सरफेस को परपेंडिकुलर नॉर्मल माने हला जे सरफेस टा मितो छी आको जे कोन से रे ड्रा कलो ये हला परपेंडिकुलर ता पाबो नॉर्मल माने एनी लाइन दैट इज परपेंडिकुलर टू गिवन सरफेस हमु जो सरफेस दियथियो से सरफेस को लाइन ड्रा करली यदि आपको परपेंडिकुलर आपको हबो नॉर्मल माने ला परपेंडिकुलर ठीक अछि तो एथिरे दीटा एंगल क्रिएट करला जो गोडला ए एंगल आवडला ए बी एंगल अछि से वाला जिंसो हला नाउ ये ला इंसिडेंट लाइट ये ला नॉर्मल मन रखो इंसिडेंट रे आ नॉर्मल रे मध्य रे जो एंगल फॉर्म हला जो एंगल आसेला I is the angle of incidence. Similarly, तमरे ये नॉर्मल हला ये रिफ्लेक्टेड रे हला नॉर्मल को रिफ्लेक्टेड रे मध्ये रे जो एंगल हला ता R R हला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन so I हला एंगल ऑफ इंसिडेंस and R हला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन so what is I now I हला तमरो एंगल ऑफ incidence angle of incidence अच्छा बोलो angle of incidence कौन ना it is the angle between incident ray to normal ये पहले very important concept पहले मन रखो angle between incident ray to normal this is the angle between incident ray and normal this is the angle of incidence similarly suppose you have normal this is your R is the angle of reflection what is the angle of reflection the angle of reflection is the angle between normal to reflected so that is your angle of reflection that means it is the angle between reflected ray
and normal, reflected ray and normal. ये पे सब पे यूज हो पे मन रखो एंगल ऑफ इंसिडेंस माने एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे टू नॉर्मल and r is the angle of reflection, that is the angle between reflected ray and normal. ये ला reflected ray ये normal आ भीतर angle से ला r, ये ला incident ray normal, that is the angle of incidence phi. ठीक हो ची? Now you have some rules regulations, that is called first law of reflection. First law of reflection कौन कहले तुमको से ना तो आले पढ़ती हो आले तुमको 10th class से थिला. So incident ray, normal and reflected ray and point of incidence are lie in a single plane. This is the first law of reflection. So the first law of reflection, incident ray, normal और reflected ray और कौन point of incidence गुट्टे plane तमरो रहबो ये हला first law of reflection. कौन कौन बोली incident ray, normal reflected ray, point of incidence are lie in a single plane or in a plane. So this is called your first law of reflection. Second law of reflection. First law कौन बोला incident रे normal लाओ ये reflected रे point of incidence गुट्टे plane रे रहे देखो ये सब गुट्टे plane रे रहे ये ला first law. Second law ला second law कौन बोला पहला ये ला angle of incidence ये ला angle of reflection, but both angle will be equal, that is angle of incidence I and angle of reflection R both will be equal. So this is the second law of reflection. Okay, note it down quick. सबको लिख देली એટલે હું કહું છું રિફ્લેક્શન તમારે સિલેબસ રે ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବେସିକ କନସେପ୍ଟ ରିକ୍ୱାୟରମେଣ୍ଟ ଏଟା ମନେ ରଖ ହେଲା ତ ଭଲସେ ଶୁଣ ଧ୍ୟାନ से नेक्स्ट देखो वाला ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି ଇଏ ହେଲା ଇନସିଡେंट ରେ ଇଏ ହେଲା ନର୍ମାଲ ଇଏ ହେଲା ତମର ରିଫ୍ଲେକ୍ଟେड बेसिकली ପିଲା ମନେ ରଖ ରିଫ୍ଲେକ୍ସ ହେଲା ଦି ପ୍ରକାର, ଇଟ ଇଜ ଦ ଟୁ टाइप्स. ଗୋଟେ ତମର ହେଲା ରେଗୁଲାର ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ और बाबू आवडला irregular reflection. पता बाबू this is also called diffuse reflection. रेगुलर रिफ्लेक्शन और irregular रिफ्लेक्शन का कौन बाबू diffuse reflection, irregular but diffuse reflection. तो फर्स्ट टाइम बोले व्हाट इज रेगुलर रिफ्लेक्शन. रेगुलर माने कोन देखो जे कोनोसी बल्क ऑफ लाइट जेतो बोलेला पहिले मन देखो सरफेस रेगुलर पहिले सरफेस पहिले फाइन सरफेस अछि बस स्मूथ सरफेस अछि तो सिंपल प्लेन सरफेस अछि. जदि एथे लाइट पड़ला बल्क ऑफ लाइट पड़ला जेते रिफ्लेक्ट क्रिएट हो ये ला रिफ्लेक्टेड लाइट ये रिफ्लेक्टेड लाइट ये रिफ्लेक्टेड लाइट. So that type of reflection is called regular reflection.
That means reflection through regular surface. This is the regular surface or plane surface or smooth surface. So reflection through regular surface. Reflection through regular surface known as regular reflection. Okay. See the surface irregular. Surface is irregular, diffuse surface, not plane surface. So in this case, when light is incident over here, the light will bend in different direction. So a case रे गोटे particular case light reflect होची, but एथे कौन वो random light reflect होची. Because this surface is not smooth, it's irregular surface, so light will move in different direction after reflection. Light टा कौन वो reflection for different direction से move करियो. So that is called your irregular reflection. This is the diffuse by irregular. That is the reflection through irregular surface. Reflection through irregular surface known as diffuse reflection. এটা পেলে মন রাখো, এটা বেসিক্যালি আমরা ইউজ করা হবে সিনেমা হলের কনসেপ্ট ইউজ করা হচ্ছে। এতে দিস ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এক্সাম্পলস অফ সিনেমা হল। সিনেমা হলের এটা পেলে বেসিক তোমরা এই কনসেপ্টটা বেশি ইউজ হচ্ছে। ওকে, সো आप নোট করো। ओके, मो आगे तो मु कहछि जे तमर ये सरफेस हला, ये हला इंसिडेंट रे हला, ये हला रिफ्लेक्टेड रे हला, तो ये हला इंसिडेंट रे, ये हला रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल हला। ए जो एंगल हला ता को कहलो एंगल ऑफ इंसिडेंस, आप एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो तो कहली मु ये हला कंप्लीट 90 डिग्री, इट्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जदि तमर ये एंगल आई हला, सो ये केता आपले कहलो दिस विल बी योर एंगल ऑफ 90 माइनस आई ना। तो आपको पाओ जुड़े प्ले मन रखो, another angle is called, this is angle is called glancing angle. Glancing angle देखो आर काम कोन कोइ देखो, तो देखि दियो मॉर्निंग टाइम और इवनिंग टाइम रे तमर शैडो पार्ट फॉर्म हो। काहे देखो जो तमर ये सरफेस है प्ले तमर वाटर सरफेस है ना, ए सन अछिडी, तो ये मॉर्निंग टाइम, सन एपड़ा से ये इवनिंग टाइम हला। तो मॉर्निंग टाइम रे इवनिंग टाइम रे तोर शैडो पार्ट हो तो पर इमेज क्रिएट करियो, बट एट नून टाइम में कोन हो, देयर इज नो शैडो ड्यू टू द कंसेप्ट ग्लेसिंग एंगल। तो देखि तो समुद्र ऊपर जदि फ्लाइट जाउथो माने ता तळे जब पानी थिबो, से पानी रे ब्लैक कलर आसीले से तुमु से देखा जे फ्लाइट होला वाली। सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ ग्लेसिंग एंगल। आ पले मनटा कहते कि ग्लेसिंग एंगल हला जे तमरे ये आई हला, दैट विल बी योर एंगल ऑफ 90 माइनस आई। This angle of 90 minus I is called your glancing angle. Okay? Clearly?
तुमको गोटे कांसेप्ट पूछले मन रखो एंगल ऑफ डेविएशन कोन कहूची व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन डेविएशन कोन तो डेविएशन माने कोन कहतो देखो सपोज फॉर एग्जांपल ये तुमरा प्लेन सरफेस एटा ला बल्जिंग सरफेस ऊपरटा ला प्लेन सरफेस तळला रफ सरफेस अछि जने रिफ्लेक्शन हो भाभी दियो तुमरा लागे इंसिडेंट रे तो ये इंसिडेंट रहला लाइट ता का रिफ्लेक्टेड रहबो ना लाइट एपड़ वाला ये रिफ्लेक्टेड ये नॉर्मल ये नॉर्मल जदि हाब दियो जदि ये सरफेस तो नथियो इफ सरफेस इज नॉट अवेलेबल हियर ये सरफेस नथियो कोन हबो तो light will move in this direction yes or not that means light can move in this direction so due to that surface light is reflected okay so that angle this is your angle I this is your angle R so this is called your angle of deviation that is called delta because whole angle is 180 degree this is a straight line 180 degree this angle is goes over here so that is delta equals to your 180 minus I plus R because mu tom kaithili angle I equals to angle R so you can take it angle I equals to angle R so delta will be equals to 180 minus 2I so this is called your angle of deviation light का deviate हला तार ओरिजिनल पाथ रो लाइट तक केते डेविएट हला दैट इज द एंगल ऑफ डेविएशन एटा बुझिला तो ये तो जे मन रखो सपोज सिंपल कथा जे तमरे सरफेस का जदी नाही तो लाइट ता सीधा जाता है लाइट कैन मूव्स इन स्ट्रेट लाइन ए सरफेस अछि माने लाइट द सरफेस लाइट का लाइट बैंड हला ड्यू टू दिस सरफेस लाइट इज बैंड ओवर हियर so from straight path to how much the light is bent over here that is called your angle of deviation that means this angle the whole angle is 180 degree 180 minus this angle goes over here so that will be minus so that is 180 minus angle of I plus R according to law of reflection I have told you that angle I equals to angle R so I plus that is 2I that is 180 minus 2I so this is called angle of deviation okay note down so will you so तमर एपी हला रिफ्लेक्शन कांसेप्ट रिफ्लेक्शन राउट के लिए मोर कांसेप्ट अछि हला जे हमर सिलेबस नाही तो जहा हमर बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ रिफ्लेक्शन को तो ऑलरेडी कहि देली हला सो आमे जे तमरे सिलेबस रे जस्ट खाली तो मेमोरी में कहली जे सिलेबस नाही तबे नेक्स्ट क्लास में पढी आमे रिफ्रैक्शन हमर सिलेबस अछि सो नेक्स्ट क्लास टू तमरो क्लास हला वेरी इंपोर्टेंट हला यसु नोट करो हला और सार क्लास सार नोट करो डिटेल्स प्ले सिस्टमैटिक क्लास आसो जहां डाउट थियो फोन करी पछारी ठीक अछि रहली।